Start. Myself, Dr. Bindu Chauhan. I have been working as an associate professor in KC Department of Physiology University. Today we will talk about hypertension, which is a lifestyle disorder. So today we are going to discuss about hypertension and what kind of problems and complications we can face due to this lifestyle disorder. We are going to discuss all this today. So let's start. So first of all, hypertension. Hypertension is commonly known as high blood pressure, which is a chronic condition where the systolic blood pressure is more than 140 mm of Hg and diastolic blood pressure is more than 90 mm of Hg. This condition, often symptomless, significantly increases the risk of heart disease, stroke, and kidney failure, often dubbed as silent killer. Risk factors include aging, genetic predisposition, obesity, sedentary lifestyle, excessive salt intake, alcohol consumption, and smoking. Effective management combines lifestyle changes like a balanced diet, regular physical activity, and medications to keep blood pressure levels within a healthy range. Now, the prevalence of hypertension. Hypertension is the most important chronic disease risk factor in India. Recent epidemiological studies have reported that hypertension is increasing in India with a more rapid increase in rural and young populations. Fifth National Family Healthcare Survey and Indian Council of Medical Research surveys have reported that there are substantial geographical variations in hypertension prevalence, with greater prevalence in more diverse states and districts of the country. There is a high prevalence of young age hypertension, especially in the less developed states. The incidence of adverse events from hypertension related cardiovascular disease is significantly greater in India than in more developed countries. A low level of hypertension awareness, treatment, and control, especially in rural and undeserved urban population, is an important finding. Now, the classification. So the optimal BP is 120 by 80. That is, systolic is 120 mm of Hg and diastolic is 80 mm of Hg. When systolic blood pressure is more than 140 mm of Hg and diastolic is more than 90 mm of Hg, then it is considered as hypertension. But in case of normal range, it ranges from 120 to 129 systolic mm of Hg and diastolic is 80 to 84 mm of Hg. High normal range is 130 to 139 mm of Hg and diastolic is 85 to 89 mm of Hg. Next is pre-hypertension stage. It ranges from 120 to 139 mm of Hg and diastolic ranges from 80 to 90 mm of Hg. तो जो हमारी प्री हाइपरटेंशन स्टेज है इसमें हमें कोई ड्रग्स थेरेपी की जरूरत नहीं होती बट फिर भी ड्यू टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हम इस हाइपरटेंशन से ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन स्टेज 1 दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन BP that is systolic. It ranges from 140 to 159 mm of Hg and diastolic ranges from 100 to 109 mm of Hg. In stage 2, systolic is more than or equal to 160 mm of Hg and diastolic is more than 100 mm of Hg. Next is type of hypertension. So mainly there are two types of hypertension. First one is primary hypertension and second one is secondary hypertension. Primary hypertension is also called as the essential hypertension and there is a no cause for this type of hypertension. प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें कभी भी कोई कॉज जो है वो देखने को नहीं मिलता है और 95% केसेस में आजकल एसेंशियल हाइपरटेंशन है वही देखने को मिल रही है बट इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन में देयर इज अंडरलाइंग पैथोलॉजी मींस उसका कोई ना कोई कॉज है हमारे पास और वो 5% केसेस में हमें देखने को मिलती है जैसे कोई रीनल कॉज हो गया या कोई एंडोक्राइनल डिजीज जो है वो हमें देखने को मिल जाती है
बट ये रेयर सिचुएशन में। Other type of hypertension are resistant hypertension, isolated systolic hypertension, borderline hypertension, benign hypertension, malignant hypertension. Next is hypertensive emergency, and last one is hypertensive urgency. So we will discuss it. So first one is primary hypertension. High blood pressure that doesn't have a single known cause is known as primary hypertension. It is also called as essential hypertension. Three or more blood pressure readings taken over three visits that average above 140 by 90 mm of Hg. Next is secondary hypertension. Secondary hypertension is high blood pressure caused by an underlying medical condition or disease. Common causes include kidney disease, adrenal gland disorders, thyroid problems, obstructive sleep apnea. Next is resistant hypertension. As the name is indicating, resistant hypertension. Blood pressure in this type of hypertension remains above in spite of the concurrent use of three antihypertensive agents of different classes. Ideally, one of the three agents should be a diuretics and all agents should be prescribed at optimal dose amounts. So इस टाइप की हाइपरटेंशन में क्या रहता है कि अगर हम पेशेंट को थ्री एंटी हाइपरटेंसिव भी देते हैं और उसमें भी मस्ट है कि जो थ्री हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव होने चाहिए वो दैट मस्ट बी डायरेटिक्स। तो इवन डायरेटिक्स देने के बाद भी अगर हमें लग रहा है कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दैट इज मोर देन 140 by 100 mm of Hg, then it is called as the resistant hypertension. Next is isolated systolic hypertension. Systolic blood pressure above 140 mm of Hg with diastolic blood pressure of less than 90 mm of Hg. Systolic hypertension increases the risk of heart disease, stroke, and kidney problems. तो isolated systolic hypertension में क्या रहता है कि जो हमारा systolic BP है that is above the 140 और जो diastolic है वो less than 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 की रेंज में भी हो सकता है. So this type of hypertension is called as isolated systolic hypertension. Next is borderline hypertension. It is defined as intermittent elevation of blood pressure with normal readings. Patients with borderline hypertension still carries a risk of developing cardiovascular disease. So borderline hypertension का मतलब क्या है कि sometimes क्या आएगा कि patients का जो BP है 140 by 90 से अब चला जाएगा और sometimes क्या होगा normal readings आ जाएगी. तो ये हमें इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में जो पेशेंट है वो डेवलप कर सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज. नेक्स्ट इज benign hypertension, a term used to describe uncomplicated hypertension, usually in long duration and mild to moderate severity. It may be primary or secondary in nature. Next is malignant hypertension. Systolic blood pressure greater than 180 mm of Hg and diastolic blood pressure greater than 120 mm of Hg. It is a severe form of hypertension that can lead to organ damage and is considered as medical emergency. तो जो मेडिकल हाइपरटेंशन है, मैलिग्नेंट जो हाइपरटेंशन है, इसको हम कंसीडर करते हैं मेडिकल इमरजेंसी क्योंकि इसमें जो हमारा बीपी रहता है सिस्टोलिक दैट इज मोर देन 180 mm ऑफ Hg और जो डायस्टोलिक रहता है 120 mm ऑफ Hg. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हमारा रीनल फेलियर हमारा हो सकता है और ये फेटल हो सकता है. नेक्स्ट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. A hypertensive emergency is a severe and sudden increase in blood pressure that can lead to the life-threatening complications. Blood pressure at or more than 180 by 120 mm of Hg and has symptoms of organ damage. तो जो previously हमने पढ़ा कि hypertensive urgency में क्या था, malignant जो hypertension थी वो एक medical emergency है, but hypertensive emergency में क्या रहता है यहाँ पे हमें साइंस जो है वो दिखना शुरू हो जाता है यहाँ पे जैसे ब्रेन डैमेज हो गया हमारा किडनी फेलियर जो है वो इस तरह के साइंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. Immediate medical intervention is crucial to prevent irreversible or organ damage and other serious health issues.
Next is hypertensive urgency. It is defined as a condition where blood pressure is extremely high. That is, systolic is more than 180 mm of Hg and diastolic is more than 120 mm of Hg or higher, but without the signs of immediate organ damage. अब यहाँ पे immediate organ damage के signs तो हमें नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी कुछ एक सिम्टम जो है जो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, दैट इज हेडेक, डिजीनेस, बट विदाउट द एविडेंस ऑफ एक्यूट ऑर्गन डैमेज लाइक द हार्ट, किडनीज और ब्रेन. तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में हमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना जो है वो एक इमरजेंसी रहती है, बट इस कंडीशन में क्या रहता है कि जो हमारा ब्रेन फेलियर है या हार्ट फेलियर है या रीनल फेलियर है, उस तरह के साइंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट फ्यूचर में और कुछ टाइम के बाद जो है पेशेंट जो है वो लैंड कर सकता है हार्ट फेलियर में, रीनल फेलियर में, और उसका ब्रेन डैमेज के साइंस हमें देखने को मिलते हैं. तो बेटर होगा कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में ही हम पेशेंट को ट्रीट कर लें. नेक्स्ट इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, दैट इज रिस्क फैक्टर्स. कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हमें लगता है कि जो पेशेंट है और इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोन है हाइपरटेंशन के लिए. So first one is age. The risk of high blood pressure increases with age. That is more than 55 for men and more than 65 for women. तो मेल और फीमेल के लिए दोनों ये सेम नहीं है. मेल्स की कंडीशन में अगर उनकी एज रहती है अबव 55 एंड फीमेल्स की जो एज रहती है मोर देन 65, तो इस पर्टिकुलर एज पे वो हाइपरटेंशन के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं ड्यू टू द अल्टर्ड फिजियोलॉजी. Next is genetics. Family history is a risk factor for high blood pressure. Individuals having both hypertensive parents have 50% chance of getting hypertension. तो यहाँ पे genetics जो है बहुत important role play करती है hypertension के लिए. तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके बोथ जो पेरेंट्स हैं दे आर हाइपरटेंसिव, तो हमें वहां पे ज्यादा अलर्ट होना हो जाना चाहिए क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके 50% मोर चांसेस रहते हैं ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन. तो इन लोगों को जिनके भी बोथ पेरेंट्स जो है वो हाइपरटेंसिव है, इन लोगों को आफ्टर द एज ऑफ 50 और इवन की मैं तो कहूंगी कि आफ्टर द एज ऑफ 30 उनको रेगुलर चेकअप अपना करवाना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो है वो हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो इनको थोड़ा कम हो जाए. नेक्स्ट इज वेट. Being overweight or obese can increase the risk of high blood pressure. So, आजकल जो ओबेसिटी है वो हमें हर किसी को में देखने को मिल रही है और स्पेशली जो सेंट्रल ओबेसिटी है. सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब क्या है कि आपका जो एब्डोमेन है वहां पे फैट डिपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा है. तो स्पेशली ओवरऑल ओबीस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव सेंट्रल ओबेसिटी देन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. Next is diet. An unhealthy diet, especially one high in salt, can increase the risk of high blood pressure. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि this is a lifestyle disorder. Hypertension जो है एक lifestyle disorder है. तो ये इसका कोई पर्टिकुलर हमें कॉज भी पता नहीं है, बट हमारा अनहेल्दी अगर डाइट हम ले रहे हैं, हमारी रूटीन जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल रह रहा है, तो हमें हाइपरटेंशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. Next is physical activity. Not being physical active can increase the risk of high blood pressure. So ये भी बहुत important चीज है कि physical inactive होना. एक्चुअल में हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ली, शाम को एक्सरसाइज कर ली तो हम फिजिकली एक्टिव हो गए, जबकि इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है. फिजिकल एक्टिव होने का मतलब है कि आपको अपनी बॉडी को आफ्टर 2 आवर्स जो है वो आपको बॉडी में आपके एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल कोई ना कोई आपको एक्टिविटी करनी है. बट आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और ऑफिस गोइंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हमें ज्यादा हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज अल्कोहल. ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. Next is tobacco use. Smoking tobacco can increase the risk of high blood pressure. Next is sleep apnea. Mild sleep apnea can increase the risk of high blood pressure. Next is medications. Some medications can make it harder for your body to control your blood pressure. So some medications like oral contraceptive pills, NSAIDs, और antidepressants. तो ये medications जो है ये भी इनको ज्यादा अगर आप एक्सेसिवली ले रहे हैं, लॉन्गर टाइम के लिए आप इनको यूज कर रहे हैं, तो भी ज्यादा चांसेस है कि आप हाइपरटेंसिव हो सकते हो.
Next is other medical conditions. Some medical conditions such as chronic kidney disease can increase the risk of high blood pressure. Next is race. High blood pressure is particularly common among black people. Now, the risk factor. So the individuals who are taking too much salt in diet and too little potassium in their diet, they are at risk for developing hypertension. Not being physical active, drinking alcohol, stress, excessive use of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, old age, obesity, loss of elastic tissue, and arteriosclerosis of aorta and large vessels. तो ये सारे के सारे जो है वो रिस्क फैक्टर है. अगर आप टू मच सॉल्ट है आपकी डाइट में, टू लिटिल पोटेशियम है, यू आर फिजिकली इनएक्टिव, you are drinking too much alcohol, you are in stress, taking excessive use of NSAIDs, or old age में you are also obese, then you are at risk. Next is causes of secondary hypertension. तो जो फर्स्ट हमने अभी अभी तक का जो हमने डिस्कस किया है दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे हमें उसके कॉज का हमें कोई भी पता नहीं है कि उसका कॉज क्या है. हम जस्ट हाइपोथेटिकली था वो एक कि हमारा लाइफस्टाइल अगर खराब है, रूटीन अगर हमारी खराब है, तो उस केस में क्या है प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं. और 95% केसेस में जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सो मेन कॉजेस रीनल disorders. So due to the renal disorder, that is renal parenchymal disease, acute glomerulonephritis, chronic nephritis, diabetic nephropathy. And next is endocrinal disorders, that is acromegaly, hypothyroidism, hyperthyroidism, and hypercalcemia. Next is causes of secondary hypertension. Next is adrenal, that is Cushing syndrome, pheochromocytoma, extra-adrenal chromaffin tumors. Brain tumors, pregnancy-induced neurological disorders, encephalitis, sleep apnea, lead poisoning, GP syndrome, stress, and hypoglycemia. These are all factors that can lead to hypertension. Acute stress, burns, alcohol withdrawal, post-operative cases, use of alcohol and drugs. ये सारी जो कंडीशंस हैं वो हमें हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप कर सकती हैं. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. सो ऑलरेडी हमने अभी मेंशन करा कि दिस इज अ साइलेंट किलर. हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर क्योंकि पेशेंट में यहाँ पे सिम्टम्स ही डेवलप नहीं होते, बट स्टिल पेशेंट may show or may not show some symptoms like headache, dizziness, blurred vision, shortness of breath, nausea, reduced urination, vomiting, chest pain, confusion, low blood pressure, irregular heartbeat, and fatigue. Next is lab investigations. So laboratory investigations to rule out any pathology or any disease. First is regular BP monitoring, routine blood tests like HB, TLC, and ESR, biochemical test, fasting blood sugar, urea, serum creatinine, and lipid profile. Routine and microscopic examination of urine. Next investigation in ECG to rule out any cardiac pathology. Next is checks X-ray, and last one is USG, etc. Next is complications. तो अभी हम complications पे आते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. कुछ टाइम तक तो क्या रहता है कि पेशेंट को खुद ही पता नहीं चलता है कि उसके क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं. और हमने ऑलरेडी बहुत बार ये मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि हाइपरटेंशन के कभी सिम्टम्स आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं. कुछ टाइम तक तो ऐसा होता है 2 और 3 इयर्स तक पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं. सडनली कॉम्प्लिकेशंस में ही पेशेंट जो है वो लैंड करता है. जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, हम बोलते हैं कि कोई पेशेंट है, सडनली उसको हार्ट अटैक आ गया, या सडनली क्या है स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस का अटैक उसको हो गया. तो वो सारी चीजें क्यों हुई? ड्यू टू द क्रॉनिक पैथोलॉजी की वजह से पेशेंट को कभी कोई साइन एंड सिम्टम्स आए ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि पेशेंट सडनली एक मेडिकल इमरजेंसी, हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर स्ट्रोक, उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो इनिशियली लैंड हो गया. नेक्स्ट इज एन्यूरिज्म, हार्ट फेलियर, किडनी प्रॉब्लम्स, रेटिनल प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया.
Next is target organs. So target organs are cardiovascular system, kidneys, nervous system, and eyes. Complications of prolonged uncontrolled hypertension. Changes in blood vessels wall leading to vessel trauma and arteriosclerosis throughout the vasculature. Complications arise due to the target organ dysfunction and ultimately failure. Damage to blood vessels can be seen on fundoscopy. Next is effect on cardiovascular system. Ventricular hypertrophy, dysfunction and failure, coronary artery disease, and acute MI. Next is nervous system, that is stroke. Next is cerebral atrophy and dementia. Next is effect on kidneys. So glomerular sclerosis leading to impaired function, and finally end-stage kidney disease. Ischemic kidney disease, especially when renal artery stenosis is the cause of hypertension. Next is the eyes. Retinopathy, retinal hemorrhage, and impaired vision. Vitreous hemorrhage, neuropathy of the nerves leading to extraocular muscles, paralysis, and dysfunction. Now, the management. So there are two different approaches of management. First one is non-pharmacological management, and next is pharmacological management. So we will discuss non-pharmacological management in detail. Non-pharmacological management include lifestyle modifications, जो कि हमने पहले भी अभी डिस्कस करा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको क्या करने हैं, जो भी आपकी रूटीन हैम्पर हो रही है, स्लीप है, यू आर टेकिंग टू मच सॉल्ट और टू लिटिल पोटेशियम, आपका स्लीप पैटर्न जो है वो हैम्पर हो रहा है, तो वो सारी लाइफ मॉडिफिकेशंस जो है वो हमें करनी है. मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट, reduce salt intake, increase physical activity, stop taking tobacco and smoking cessation, limit or stop alcohol consumption, limit fat intake, and control diabetes. Lifestyle modifications. First one is dietary changes. Consume a diet rich in fresh vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds. Avoid processed foods and reduce salt intake. Next is herbal remedies. You can take herbs like Brahmi, Archana, Punarnava, garlic, and Triphala, which have blood pressure lowering properties. Next is yoga and meditation. Practice yoga asanas like Savasana, Pranayama, along with meditation to reduce stress and lower blood pressure. Next is Panchkarma. Panchkarma is a detoxifying process. You can undergo detoxification treatments like Panchkarma, like Vamna, Virechana, to remove toxins from the body. Next is regular exercise. Engage in regular physical activity to maintain a healthy weight and improve cardiovascular health. Next is sleep and stress management. Ensure adequate sleep and practice stress reducing techniques like deep breathing and mindfulness. Next is massage therapy. तो रेगुलर अभ्यंगा जिसको हम मसाज थेरेपी बोलते हैं, ऑयल मसाज विद आयुर्वेदिक जो भी ऑयल्स हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, you can use them to improve the circulation and reduce stress. Avoid stimulants. Limit intake of caffeine and alcohol, which can increase blood pressure. Next is hydration. Drink lukewarm water with a few drops of lemon juice to help manage hypertension. Spices and herbs. You can use turmeric, ginger, and garlic in your cooking for their anti-inflammatory and heart-healthy benefits. Next is seasonal routines. Adjust your diet and lifestyle according to the seasons to maintain balance and health. Positive mindset. Focus on positive thinking and cultivate a calm, centered mind. Now, the yoga in hypertension. जो योगा है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइपरटेंशन क्योर करने में. तो जैसे हमने पहले भी कहा कि जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं करोगे, आप जितनी मर्जी मेडिकेशन ले लो, हाइपरटेंशन आपका क्योर हो ही नहीं सकता. कंट्रोल हो सकता है बट वो फुली क्योर नहीं हो सकता. तो क्योर करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स हैं आयुर्वेद की, जैसे प्राणायाम हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम उनको बोलते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है, नाड़ी शोधना है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग.
It can help to reduce stress and lower blood pressure. Asanas हैं postures, gentle postures such as Tadasana, mountain pose, tree pose, child pose. These all poses are beneficial. Next is meditation. Regular practice of mindfulness meditation can help manage stress and reduce blood pressure. Next is Yoga Nidra. This guided relaxation technique can help in reducing stress and promoting overall well-being. Regular practice consistency is the key and aim for at least 30 minutes of yoga practice daily. Now, the Ayurvedic drugs that can be used to treat hypertension. So first one is Ashwagandha. It manages stress and lower blood pressure. Next is Sargandha. It helps lowering the blood pressure. Next is Trifla. Trifla detoxify भी करेगी आपकी बॉडी को and ये blood pressure को भी लो करती है. Next is Brahmi. It reduces stress and anxiety, promoting overall well-being. Next is Arjuna. Heart health and it improves the circulation. Rasna. And next is Jotamans. Thank you.